Just a little request, Ankit sir, as I have told you that I will take a break whenever my Yeah, boss yeah, sir. comes to the office. Huh? Definitely, sir. Definitely, Okay. definitely. Okay, so good afternoon, participants gathered in this virtual meet as well as through YouTube. Uh, in the today's session, this is the last day of first week of this program. That is NEP Orientation and Sensitization Program launched by the Ministry of Education through University Grants Commission and run by the Sant Gadge Baba Amravati University Malvi Mission Teacher Training Center. In today's session, we have invited Professor Dr. Mohammad Abdul Rafi sir. Sir, warm welcome you on behalf of the Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba Thank you. Amravati Thank you. University, Thank you. this flagship program. Friends, Professor Rafi sir is presently serving as the Assistant Director at UGC Malvi Mission Teacher Training Center, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar. Sir has more than 15 years of teaching experience as well as the research experience. His area of specialization is commerce and management. He is belong to specifically commerce and management faculty. He has published more than 60 research paper as well as book chapter and books also. Specific thing is that he has also completed one major research project and one minor research project. He has participated in various conferences, seminars, and workshops. He is a he is a editor of the various journals, including Advance in Business related specific research journal. Thereafter, International Journal of Engineering, and and he is edited most of the journal. As far as research guidance concerned, under his able guidance, four students are registered. Three students are registered for the PhD degree program, and two students are completed their PhD degree. As well as for his concern, uh, he has recipient of the award of Best Young University Teacher Award in 2014 by the Department of Journalism, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Shivaji Sambhaji Nagar. Sir is a lifetime member of the Indian Commerce Association as well as the Marathwada Commerce and Management Association and Robert Club Aurangabad. This is a brief introduction regarding Professor Rafi sir. The basic thing is behind that, friends, including 8 theme that has been provided by the UGC. Today, sir will conduct. It is not a monologue; it is a dialogue session. And today, sir will conduct a session on higher education and society. मराठीत म्हणतात की आपण या समाजात आलो तर आपल्याला समाजाचं काहीतरी देणं लागतं आणि त्या समाजाच्या देण्यासाठी आपली सगळ्यात महत्वाची भूमिका आहे आणि तीच आपण या हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मधनं पूर्ण करू शकतो. So with this brief introduction, sir, I again warm welcome you and request you to start with your session. Sir, please. Thank you, Ankit ji, for your kind introduction. We should really appreciate the efforts of Mr. Ankit ji, who is looking after the office work and also starting the course. A true inspiration should be taken from him, that how a person can be a multitasking person. You give him any task, Mr. Ankit will complete. From past 5.5 years, I'm seeing him continuously. So really thankful for your kind introduction, Ankit ji. And also my special thanks to the respected director for inviting me to this NEP sensitization, orientation and sensitization program, which will be held for coming 2 years, and the UGC has target around 15 lakh teachers. The target of UGC is to train and sensitize the faculty members regarding NEP. And you see, friends, that we are really fortunate that these courses are online at a home comfort. We are coming, sitting here, and we are having a privilege of doing this course. And in the last meeting held with the UGC officials just 2 days before, see how much cautious UGC is regarding the training of teachers when it comes to the NEP, because they want to implement the NEP properly.
the UGC has also told us that even if a teacher want to register himself or herself twice for this course, they can. And from the coming days onwards, there will be no registration fees even for the refresher, short-term and orientation courses. So that shows the vision of the current chairman of the University Grants Commission, Professor Jagdish Kumar ji, that how much concern he is regarding the teachers training. So as all of you know that this is a 8-component training program, sensitization program, and many of the major topics are already being covered by the resource person. Like the resource person must have covered the IKS. Resource person must have covered uh, topics like students diversity, research and development, then information communication technology. Friends, you see that when it comes to IKS, already all of you know that uh, what major role this topic will cover in the near future. As all of you know that in future we will see that around there will be around uh, 10 percent of the syllabus will be devoted to the Indian knowledge system. And you see that in UG, PG courses, also in the orientation and refresher courses, these things will be implemented where uh, the IKS will be taught to the students as well as the teachers. So, friends, this is a phase, transition phase, where already we can say that 3 years have been passed, and you see that 3 years have been passed for implementation of this new education policy, and still many of us are we are confused कि how multiple entry exit will work. What is academic bank of credit? What is IKS? What will be the role of research and development in new education policy? What will be the role of skill development? Even our Malviya Mission Teachers Training Center is running these MMTTC courses. And in one of the lecture, I have seen that one of the person delivering a talk regarding the skill development. You see, that is a need of the hour nowadays. Or when we talk about our uh, traditional education system, in our traditional education system, it was a very rigid one where we were specialized. We are having our own specialization, and we are restricting the students to a particular specialization, and more stress is given on what you will say theoretical work instead of a practical work. A best example can be given when I was pursuing my MBA way back in the year 2002 and 2003. Our university was having one of the toughest syllabus of MBA finance, which was related to stock market, which was related to the capital market, primary market, secondary market, mutual funds, then financial institutions. All these major things were covered in that particular syllabus. And when I have, as a student, I have observed that particular thing, and I have compared as a student the syllabus of Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, with a few major universities at that time, Mumbai University or Savitribai Phule Pune University. I have seen that the syllabus, theoretical syllabus, was more tough when we were comparing the university syllabus with some other university syllabus. But when it comes to Mumbai University or some private university at that time, I have seen, friends, that at that time, those universities, they have exclusively
given last semester on hands-on training. Hands-on training to the MBA finance students on a dummy stock market software where they used to trade the stocks. डमी स्टॉक मार्केट का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके अंदर वो ट्रेड करते थे. सो देखिए आपकी कैसा ये सिचुएशन रहता है कि हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओरिएंटेड कोर्सेस लाना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान हमारा थ्योरी पर रखते हैं. जब हमारा ध्यान हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर रखते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली मार्केट में क्या नीड है और हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाट कंपनीज रिक्वायर, व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एंड व्हाट वी आर डूइंग, ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है. सो दैट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट. ऑल इंडिविजुअल studying in our colleges and university should develop one skill. We can add on courses, we can provide career orientation courses, and you see that in these types of courses, the entrepreneurship programs or skill based program, you can start in your own colleges. You can identify some NGOs, those who are providing these training, skill-based training to the students. Even as I have told you that when a resource person delivering a talk from Nanded, he was delivering a talk and he told me that there were few NGOs which were providing skill training to the student in Chhatrapati Sambhaji Nagar. I living in Chhatrapati Sambhaji Nagar since my birth, I was not knowing, but from a resource person, I came to know that there are NGOs, those who are providing skill-based courses to the UG students, and many UG students, they are going for these courses. And you see that you can also, as a teacher, as a stakeholder of the higher education institution, you can see that how you can identify these NGOs, these centers, how you can have an MOU with these centers and these NGOs to train your students for skilled based courses. Because things will be tough. In the future, you will see that emergence of the private universities, more and more private universities will be established in our country. Even in November 2023, the UGC have come up with a circular in which they have allowed the top 500 यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने इनवाइट किया है दैट यू कैन कम अप एंड यू कैन हैव अ सेटअप हियर इन इंडिया while providing a regular degree. Also, UGC have come up with a tuning agreement. In tuning agreement, credit scored from the foreign universities can be counted in our country, and also the credit scored from our Indian universities can be counted in the foreign universities. उसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो ये होता है कि कोई वो देश के विरोध में कुछ कोर्सेज नहीं होना चाहिए, सिलेबस नहीं होना चाहिए. कुछ चीजें देखकर कॉलेजेस आपस में एमओयू यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, एंड ट्यूनिंग एग्रीमेंट विल बी देयर. सो थिंग्स विल बी टफ, एंड थिंग्स आर गोइंग टफ. As when we compare our country with some other major developed countries, we as a country, we are third largest higher education around the world.
हमारे ऊपर यूएसए है और चाइना है। और सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं, सोशल साइंस में तो हम एशिया में नंबर 1 है। बट जहां पर पेपर पब्लिकेशन की, साइटेशन की बात आती है, वी आर लैगिंग बिहाइंड। इवन दो एज एम आई एम टेलिंग यू दैट as a country we are the third largest in the world, third largest in the world. But still, when it comes to the top foreign university ranking, world university ranking, very few universities are taking place, have taken place in those top 100 universities. I think ISC Bangalore and IIT Mumbai or IIM Bangalore, very few universities. Again, but the ranking has been changed, the yearly ranking. So when we are telling that we are third largest higher education, and still not a single university from our country is taking place in the top 101. That is a big question mark to the stakeholders, that where we are lagging. Taking the example of Gulf universities, in past 1 decade, we have seen that majority of the Gulf universities, they were recruiting people as a professor, associate professor, assistant professors from our country. But post Corona, again, Gulf is now preferring more Western countries degree from USA, UK. They are preferring more the European countries when it comes to recruiting the faculty members in Gulf. I have taken a first-hand experience. I have been to Gulf here to visit few universities in the month of December 2023, where many faculty members who I met, they told me that nowadays these people, they are hiring the faculty members from the UK and US universities. So where we are lagging, you and me as a stakeholder, we have to answer these questions. And coming back to my topic, that is higher education and society. Friends, when we talk about society, we have to owe to society, as rightly told by Ankit, that हमें समाज को कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है। जब हम समाज में हैं तो समाज को हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, that they have to pay back to the society. एक proverb है कि you have to think globally, but you have to work locally. You can think global when it comes to the teaching methodologies. You can think globally when you want to do research. You can think globally when you want to publish your research work. You can think globally if you want to collaborate with some research, but you have to work locally. You have to solve the problems of the local community and society. Giving an example of my university itself, I would like to highlight here. Last year, our university Women Study Center, they have called me for one uh, uh, certificate distribution program. And in that certificate distribution program, uh, uh, we have seen that it was an annual certificate distribution program in which we have seen that uh, the faculty members from the Women's Study Center, they have read out their annual report. And in that, each faculty member told me that how much they have done research in this particular academic year. In that, they have told me that they have done
how many projects, how many research paper, how many newspaper articles. So I was going through the title of the research papers. I was going through the title of the research project, then the newspaper article. And then I have told them a question when my inaugural valedictory speech was there. I have told them that, have you done a research on local community? They were having no answer. I have told them that I will give you one topic on which you can do a research as a women study center. I have told them that there are around in Chhatrapati Sambhaji Nagar 5 minority colleges. In those 5 minority colleges, there are around 5,000 admissions for 11th standard. But in this university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, when we will see the PG admissions, there are only 4 to 5 minority girls, those who are doing PG. So see the figure of 5,000, average 5,000 students. That when they are coming to the PG, only 5 students are left. That is only 0.1. So I told them that you have, as a women study center, you have to identify this problem. It will be a very good topic for research. It will have a benefit to the society. Not only minority students, but any girl student, drop out of the girl students from higher education, that can be studied. Many studies have been conducted that we can minimize how we can minimize the स्कूल ड्रॉप आउट. स्कूल ड्रॉप आउट है, काफी सारा होता है स्कूल ड्रॉप आउट. सही बात भी है, स्कूल का ड्रॉप आउट होता है, बट नोबडी हैज थिंक अबाउट द हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट. कि हायर एजुकेशन में भी ड्रॉप आउट तो होता है. हायर एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट होता है उसके अंदर क्या होगा, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स का. Not only girl students, but also the students, those who are living below poverty line, why they have been dropped out from the higher education. That can also be studied. So when it comes to higher education, you have to think global, but you have to work local. Again, quoting few example as a research guide. Many of you must be research guide from this group. Many of you must be head of the department. Many of you must be vice principals. Many of you must be working in some research center as a chairman of the research center, chairman of BOS. I would like to give you my personal experience. Once, two students visited me for registering themselves for PhD. So I was just querying or inquiring them what they are doing. So they were doing some import and export business. So I told them that what will be the use of this PhD work. So they told me that बस नाम के लिए करना है. मैंने बोला ऐसा तो नहीं रहता है, नाम के लिए करना है, बट एक PhD जब आप कर रहे हो, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होना है, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना है, कोई सोसाइटी के लिए आपने कंट्रीब्यूट करना है. वो ठीक है सर बोले, आप जैसा बोले हम वैसा करने के लिए तैयार. सो आई टोल्ड देम दैट, एक को मैं बताया कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड इन छत्रपति संभाजी नगर, दैट इज जालना रोड. देयर आर अराउंड 2 hours, 3 hours traffic jam on this road on daily basis. It is one of the busiest road. At that time, no bypasses were there for our छत्रपति संभाजी नगर. आज आ गए हैं bypasses, but उस जमाने में वो bypass नहीं हुए थे. तो मैं उन्हें ये बताया कि can you identify the solution for this particular problem through your research. Again, for the second person, मैंने ये टॉपिक बताया कि छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक में जैकवाड़ी डैम,
मड का डैम सबसे बड़ा डैम, एशिया का सबसे बड़ा डैम है वो, बट स्टिल द रेसिडेंट्स ऑफ अर्बन सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन सिटी of Chhatrapati Sambhaji Nagar, people receive water 7 days, after 7 days, after the gap of 7 days. एक जो एरिया रहता है वो रोटेट होते 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 7 दिन के बाद में उसे पानी। तो दूसरे स्टूडेंट को मैं ये बताया दैट कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पानी तो काफी सारा है हमारे पास, बट वी आर नॉट अनेबल टू क्रिएट द प्रेशर, required pressure. So no proper water distribution is there. It is totally messed, and only the people are receiving the water after a gap of 7 days. So can you identify this particular solution to this particular problem? वो दोनों को मैं बताया एंड बोथ रैन अवे, और उसके बाद में वो कभी मेरे पास में आए नहीं. This is the mentality of the students nowadays, that they want something easy. Even in the commerce, they want that the topic should be related to cooperative sugar factories, self-help groups, marketing of banking. These are the common topics on which the students are doing their PhD research. But if we give them some innovative topic, they will run away. So as a research guide, it is your responsibility to see that you are, even not only you, but your students are also doing PhD research that will be beneficial to the society. आपको जैसा पता होना चाहिए कि इंटरनेट जो इन्वेंट हुआ था वो एक प्रोजेक्ट था. यूएस के अंदर एक यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने इंटरनेट बनाया. ऐसे काफी सारे जो इनोवेशंस वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ही हुए हैं. इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, हम काफी सारे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो देखते हैं, मैक्सिमम चीजें जो है दीज आर बीन इन्वेंटेड इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. So that is the major responsibility of any academic institution, that they should pay back to the society where they are running their institutions. So, friends, संतोष शिरोडकर जी, Santosh Surarkar sir, should I remove you from the meeting? So you should pay back to the society as a institution. You have to pay back to the society. You have to do research for the society. So, friends, as a researcher, as a teacher, as a student, you should see that how much you can owe to the. So what you owe to the society. And that is the NEP all about, where doing research, you have to pay back to the society and you have to do the research, particular research. My screen is visible. Can anyone unmute and tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Yes, sir. thank you, Yes, friends. Thank you. So, friends, the topic allotted to me, that is higher education and society. Friends,
when we talk about higher education of our country, as all of you know that this is not a new thing for us. When we are talking about higher education, it dates back to centuries. Higher education is century old. Many top universities of ancient time were having their existence in our country. To name the few, Nalanda University, Taxila University, these were the top class universities. Top class universities. And in these top class universities, many scholars from around the globe used to come and study. काफी सारे कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते थे, आयुर्वेदा, योगा, वास्तुशास्त्र, संस्कृत, पाली, बुद्धिज्म, ये जो हमारे स्ट्रेंथ थे, ये पुराने युग में विश्व के कहीं लोग आकर हमारे पास में सीखने के लिए ये लोग आते थे. सो हायर एजुकेशन आज हमारा डेवलप हो रहा है ऐसा नहीं है. हायर एजुकेशन की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है, और हायर एजुकेशन जो है काफी पुराना है हमारे पास में. हायर एजुकेशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड लेवल पर हमेशा इंडिया ने हायर एजुकेशन में कोलैबोरेट किया है. सो ऑलवेज यू शुड सी दैट हायर एजुकेशन इज नॉट ए न्यू. हायर एजुकेशन इज very old in our country. Indian higher education system, as I have told you friends, that it is the third largest system in the world with 1042 यूनिवर्सिटीज. 1042 यूनिवर्सिटीज है, 42,000 कॉलेजेस है, 15 मिलियन टीचर्स है, मोर देन 20 मिलियन स्टूडेंट्स है. मोस्ट इंस्टीट्यूशन स्पेशली फ्रॉम पीजी इंस्टीट्यूशंस आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. तो आप देखिए कि कितना बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 1000 से ज्यादा, और 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, 15 लाख टीचर्स हैं हमारे पास. एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इज वेरी प्रॉमिसिंग. इट इज नियरली 50-50. जो हम मेल फीमेल की रेशियो की बात करते हैं, तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, इवन इन डेवलप्ड नेशंस की भी हम बात करते हैं, डेवलप्ड नेशंस की भी जब हम बात करते हैं, तो कोई भी सेक्टर में आज तक के 50-50 रेशियो जेंडर का रहा ही नहीं है. बहुत डेवलप कंट्री है तो मैक्सिमम गया, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, कंप्लीट हर जगह भी नहीं, मैक्सिमम गया है वो 35%. 65 फिर भी मेल डोमिनेंस रहता है, 35% फीमेल रहता है. But we are very fortunate that from past 7 and 8 years, we are seeing that the ratio of male female in both as a student and as a capacity of the teacher, it is very impressive and very promising. Outflow and info imbalance. अभी मैंने आपको बताया कि तक्षशिला और नालंदा का एग्जाम्पल दिया कि जहां पर पुराने जमाने में, पुराने काल में विश्व से लोग आते थे, विश्व से लोग आते थे. विश्व से लोग आने के बाद में वो हमसे, हमारे पास से पढ़कर जाते थे. बट यू सी, बट आप ये देखिए कि आज ये हो गया कि प्री कोरोना के पहले का मैं फिगर आपको बताता हूं, दैट अराउंड इन 1819 3,75,055 स्टूडेंट हैव बीन एडमिटेड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और ये विश्व का 6.7% ऑफ टोटल मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स है.
यानी कि विश्व के अंदर 7% जो स्टूडेंट्स है बाहर देशों में पढ़ने वाले, वो सभी भारतीय हैं। और जो टॉप शेयर जो करता है कंट्री, वो है यूएस, 36.25%। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया जो है 19.55%। फिर आता है कनाडा जो है 9.28%। और फिर आता है यूके जो है 5.23%। These are the most preferred destinations. These are the most preferred destination of the globe. So we can say that, friends, कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास में 1042 यूनिवर्सिटीज है, और हम बोलते हैं कि हमारे पास में 42,000 कॉलेजेस है, हम बोलते हैं हमारे पास में आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, आईआईएससी है, टॉप इंस्टीट्यूशंस है, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे? It is a question mark in front of you and me. As a stakeholder, you and me, it is a question mark where 3,75,000 students have mobilized around the globe for taking their higher education. Why not in our own country? Again, ये भी एक जो है बेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाना है हमें, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि हमारे बच्चे तो बाहर ना जाए, बट बाहर के बच्चे भी हमारे पास में आए। आज हम जब बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की, द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ओनली फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्री, not from developed country. I'm not restricting that the underdeveloped country students should not come, but why not also developed country students? Why not collaboration with developed countries? Why not the teachers collaborations, student exchange program with the top universities around the globe? This can happen. And this we have to do in the new education policy as a stakeholders, where we have to build the world-class institution. And the world-class institution can does not be there with the infrastructure or with the basic amenities, but also the teaching research needs to be at par with the world. So it is you and me which we can make a change here, and we can take a world-class universities. Our institution can become a world-class universities. Types of universities in our country. इसमें एक और ऐड कर लेना है हमें, फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और फिर आती है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं एग्जांपल दूं आपको, जेएनयू है, मानू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। ये सभी जो यूनिवर्सिटीज है, ये टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड रहती है। These universities are being totally funded by the central government. And you see that when it comes to the state universities, अभी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में फिर जो हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर है, मुंबई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, कोल्हापुर कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में फिर जो हमारे पास में सोलापुर यूनिवर्सिटी है। So these universities are being funded by the state government. These universities are built up with the state legislature. And these are the state universities. So again we have deemed universities. ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन जो बहुत एट पार चले जाते हैं, उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से। देन वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी चलन जो है अभी बढ़ चुका है, और आने वाले दिनों में आपको मेजर जो है
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही देखने को मिलेंगे. The figure of private university will increase. That is also, we can say that there are many good things and are many bad things about the private university. और वैसे ही हम जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं उसके लिए भी कुछ अच्छी चीजें भी रहती है, कुछ बुरी चीजें भी रहती है. देन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर आईआईटीज है, आईआईएम्स है, एम्स है, आईएसआर है, ये सब जो है इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आते हैं. हायर एजुकेशन सेटअप ऑफ आवर कंट्री. आज जो हमारा हायर एजुकेशन का जो सेटअप है बहुत रिजिड है, कॉम्प्लेक्स है. आज हमारे पास में यूजीसी है, एआईसीटी है, फार्मेसी काउंसिल है, बार काउंसिल है, हमारे पास में एनसीईआरटी है, लॉ कमीशन है, हमारे पास में होम्योपैथी का अलग है, मेडिकल काउंसिल अलग है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल अलग है. हर एक चीज के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी. So it is a very rigid higher education system that will be revamped. So we can say that in future you will see only a single regulator, that is Higher Education Commission of India, HECI. In that we will have National Higher Education Regulatory Council, we will have National Accreditation Council, then we will have Higher Education Grants Council, then we have General Education Council. इन सभी के पास में जो है ये हायर एजुकेशन, और ये एक टेंटेटिव चीज है जो आने वाले दिनों में आपको चेंज होती हुई भी दिख सकती है. बट आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शन there will be a single regulator. UGC will be abolished, AICT will be abolished, they will be merged, and how the things will come up, God knows. But एक जो सुनने में आता है वो ऐसा एक सिस्टम सुनने में आता है जहां पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलकर एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा, जिसके तहत नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, देन हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये सब उसके अंदर रहेंगे. सो दैट विल नॉट ओनली हेल्प अस फॉर इंप्रूविंग इन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, बट दे विल ऑल्सो kill the red tapeism, the slowness, the rigid system of the higher education. As I have told you, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर सेट अप थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन आर फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है. The establishment and operation are funded by the union government. Then we have state universities. Sorry to interrupt, sir. Sorry to interrupt. But the slide is not moving, sir. That's why. Okay, thank Request you, for thank a you. slideshow, Yes, sir. yes, yes. You can interrupt because these are the Sorry for technical. that, sir. No, 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 no. You can interrupt, no problem. Now, Yes, it's visible now. now types of universities are visible. Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Thank you, sir. Okay, welcome, ma'am. So as I have told you that the central universities, these are set up through a act in parliament. The establishment and operations are funded by the union government. Then we have state universities. These are set up through a act in state legislature. The state universities are primarily funded and operated by the state government. Then we have private universities. Again, these are the private universities, but need to be
set up through an act in state legislature. It include specialized institution and multidisciplinary research universities. Then deemed universities. These are the well-performing institutions that are declared to be the equal standing as the universities by the central government on the advice of the University Grants Commission. Then we have institutes of national importance, INI. These are the eminent institution. Just I will take a break. Then we are having institution of national importance. These are eminent institution of India that are known to develop highly skilled individual. They are funded by Government of India, include all IITs, NITs and AIMS institutions. Courses. Now the courses are divided into STEAM courses and non-STEAM courses. जिसे हम बोलेंगे normal language में science courses और non-science courses. अभी STEAM courses क्या है? STEAM is a broad term that stands for science, technology, engineering and mathematics. And it encompasses all the courses providing education in these disciplines. Instead of teaching the four disciplines separately, the purpose of STEAM courses involve cohesive learning and it focuses on the practical application of the subject. Effective education in STEAM courses is not limited to the theoretical learning, but extends to the experimental and research-based learning too. The well-equipped laboratories of Indian Institute enable the same and help the student to inculcate, innovate, problem solving and competent skills. Then we have non-STEAM courses. The courses offered in disciplines such as commerce, arts, business management, humanities, and social affairs are termed as non-STEAM courses. Yet again, the Indian institutions are equipped to provide education in these disciplines, wherein the students can gain expertise in the subject of their choice. Non-STEAM majors like humanities open a wide range of career opportunities where the skills, knowledge, and deeper understanding are made applicable. Similarly, education, accounting, marketing, English, journalism, language studies, degrees all have plenty of issues for various professions. A few examples for career options under non-STEAM courses include counselors, education administrators, teachers, clinical psychologists, arts, or creative directors. So basically, as I have told you that in a layman language, we can say that कि जो STEAM courses रहते हैं वो प्योरली रहते हैं साइंस के और जो नॉन स्टीम कोर्सेस रहते हैं वो प्योरली रहते हैं नॉन साइंस के आपको मैंने जैसा बताया दैट द लीस्ट ऑफ द रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज इन आवर कंट्री वी आर हैविंग AICT, then we are having Distance Education Council, then we have Rehabilitation Council of India, then we are having Bar Council of India, then we are having National Council for Teachers Education, then we are having Indian Council of Agriculture Research. It is a non-statutory body. It is only a regulatory body. Then we have Medical Council of India, Pharmacy Council of India, Indian Nursing Council, Dental Council of India, Central Council for Homeopathy, Central Council of Indian Medicine, and National Council for Rural Institution. Then Council for Architecture, State Council of Higher Education.
So these are the various bodies which is currently under working, and that becomes a very complex things for the universities, for the higher education institution to operate with them. So in future, you will see that a single regulator will monitor all the things, will monitor each and everything in the higher education. That will be the Higher Education Council of India. All these regulatory body will come under the Higher Education Council of India. Then we are having UGC. It is a very common body, University Grants Commission, the main regulatory body that performs a range of tasks such as providing funds to the university, establishing education standard for the universities, and analyzing the growth of various higher education institutions. It is crucial for university to meet the criteria set by UGC so as to enjoy degree award. Then we are having AICT. आप देखिए कि in the latest circular we are having even the BBA, BCA and BCS courses to be regulated by the AICT. अभी AICT के अंदर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी के जितने भी रिलेटेड कोर्सेस है, इट इज regulated by the AICTE. Then also we are having Council for Architecture, Research Council, Indian Council for Historical Research. Then we are having Indian Council for Social Science and Research. अब देखिए कि ICSSR तो काफी अच्छा काम कर रहा है. I'm seeing from past 3 years that ICSSR is providing the funds for doing research in social science continuously without a break. They are providing funds for the major research project, minor research project. Then they are providing funds for the postdoctorate research, doctorate research. They are providing funds for conducting the SPSS statistical research methodology workshop. Then they are also providing funds for collecting the data abroad, for the researchers to collect the data abroad. They are also providing funds for them. So ICSR is doing a really good thing. Even I am one of the beneficiary. In the year 2022 March, I have received a major research project of ICSSR. So many participants, they should see that in the month of July and August, ICSSR invites the application for major and minor research project, and it is very simplified process. Online application can be done, and all transparency is maintained by ICSSR. You have an online interview of that particular project. If your particular project is shortlisted, it is called for an personal interview online, and immediately the fund is released after sanction of the project. So all things are very streamlined when it comes to ICSSR. From past 2.5 years, I'm saying it. They have also created a WhatsApp group of project directors, and they are communicating it very fast when it comes to the project directors and researchers. So you can also go for ICSSR funding also. Supply chain of higher education. Friends, you see that how higher education system works. आप देखिए कि यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी को दो रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल करती है. एक तो है यूजीसी और दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो ये दो रेगुलेशन जो रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, मैंडेटरी रहते हैं कोई भी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी.
एक तो यूजीसी और दूसरा जो स्टेट का है तो स्टेट का लेजिस्लेटर और सेंट्रल का है तो सेंटर का लेजिस्लेटर। देन वी हैव कॉलेजेस एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज। आप देखिए कि कॉलेजेस जो रहते हैं वो यूजीसी से भी उनका वो रहता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी रहता है। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस भी उन्हें लगते हैं, एक्रेडिटेशन के भी रेगुलेशन उन्हें लगते हैं, एंड रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी सच एज एआईसीटी, यूजीसी, इसके भी कोर्सेज के लिए उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें मान्यता लगती है। So this is how the education system work, in which we can see that university is governed or monitored or controlled by the UGC or the state or central university act, and the colleges are governed and controlled by not only by UGC or the state central university act but also by the affiliating university के जो regulation है, accreditation के जो regulation है, जो regulatory other regulatory bodies जो है courses के लिए, जैसे कि AICT है, फार्मेसी काउंसिल है, या डेंटल काउंसिल है, एनसीईआरटी है, बहुत सारे काउंसिल, जैसे बीएड के कोर्सेज के लिए एनसीईआरटी रहती है, फार्मेसी कोर्सेज डिप्लोमा रो या डिग्री कोर्स रो उसके लिए जो रहते हैं फार्मेसी काउंसिल रहती है। एक्रेडिटेशन इन इंडिया, आप देखिए कि एक्रेडिटेशन की जब हम बात करते हैं, यूजीसी के लिए नैक है और एआईसीटी के लिए एमबी, और एक नया अभी हमारे पास में स्टार्ट हुआ है एनआईआर। और आप देखिए कि यूजीसी ने नैक के भी रूल्स टाइम टू टाइम बदल रही है। नाउ द लेटेस्ट इन द month of January 2024, many of you have must read the amendment of the accreditation, where 6-point program the NAC has given, in that the recruitment of staff done, then NIRF ranking, then salary paid to the staff, then how many courses are run by the colleges. This will also be seen in the University Grants Commission's NAC. Then in AICT we have NBA, and for both these we have NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो रहता है, NIRF रैंकिंग ईयरली रैंकिंग रहती है, उसके अंदर भी सहभाग करना आपके इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी होने वाला है आने वाले दिनों में, इफ यू वांट टू गो फॉर नैक। और आज देखिए कि जैसे ही नैक मैंडेटरी हुआ है, महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा, मैक्सिमम कॉलेजेस हैव डन द नैक। जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने मैंडेटरी किया है नैक का, तो सभी लोगों ने वो नैक करना स्टार्ट किया है, नैक करना स्टार्ट किया है। और आज आप देखिए कि नैक वालों के पास में 2-2, 3-3 महीने टाइम। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग कि जब मैंडेटरी हो रहा है जब कर रहे हैं, इट शुड बी डन, इवैल्यूएशन एक्रेडिटेशन शुड बी डन इन एडवांस। You should evaluate yourself as an institution. What are the shortcomings? What are the strengths? How you can overcome your shortcomings? How you can reap the benefit from your strength as an institution. Then, as I have told you in the starting of my lecture, friends, कि 1043 number of universities were there in 2022। हो सकता है 15-16 यूनिवर्सिटी आज साल 1.5 साल में बढ़ गए होंगे। 42,000 कॉलेजेस है आज, 11,779 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। Then we are having 396 universities are privately managed. 420 universities are located in rural areas. Then we are having 17 universities are exclusively for women, 3 in Rajasthan, 2 in Karnataka and Tamil Nadu, and 1 each in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttarakhand, and West Bengal. In addition to 1 central open university, 14 state open university, 1 state private open university. Then there are 110 dual mode university which offer through distance mode. Also, maximum 13 of them distance mode education are located in Tamil Nadu. Annamalai and Algappa, most popular universities offering distance education program. Then we are having वुमेन्स यूनिवर्सिटीज, जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी हमारे पास में है।
मुझे ऐसा लगेगा कि सभी मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र के, तो सभी को पता ही होंगी ये चीज की एसएनडीटी जो यूनिवर्सिटी है एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है. देन देर आर 522 जनरल, 177 टेक्निकल, 63 एग्रीकल्चर एंड अलाइड, 66 मेडिकल, 23 लॉ एंड 12 संस्कृत एंड 11 language universities, and rest 145 universities are of other categories. Then top 8 states in terms of highest number of colleges in India are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Gujarat. वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस है वो उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के अंदर पूना, जिसे ईस्ट का हार्वर्ड भी बोला जाता है, और नागपुर, पूना और नागपुर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. और जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, वहीं पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. और महाराष्ट्र के अंदर और एक खूबी मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट एडेड कॉलेजेस की संख्या काफी, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, यहां पर प्राइवेट एडेड कॉलेजेस की भी संख्या काफी ज्यादा है. ये आपको ध्यान रखना है कि बाहर के स्टेट्स में ज्यादा एडेड कॉलेजेस नहीं रहते, गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं, टोटली प्राइवेट कॉलेज. महाराष्ट्र में सिर्फ प्राइवेट एडेड कॉलेजेस. Then Bangalore urban district tops in terms of number of colleges with 1000, more than 1000 colleges, followed by Jaipur, that is 606 colleges. Then college density, that is the number of colleges per lakh eligible population. Population in the age group of 18 to 23 varies from 7 in Bihar to 59 in Karnataka as compared to all India average of 30. यानी कि 1 लाख की पॉपुलेशन कोई डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें 1 लाख की पॉपुलेशन 18 से 23 साल की कॉलेज जाने वाली की जो उम्र रहती है, बच्चा लड़का लड़की उसकी, अगर वो 1 लाख है तो उसके लिए बिहार के अंदर सिर्फ 7 कॉलेजेस सबसे कम, और कर्नाटका में नियरली 60 कॉलेजेस, और ऑल इंडिया का जो एवरेज है वो है 30. आप देखिए कि साउथ में कर्नाटका में हाउ गुड दे आर डूइंग, दे आर एट नेशनल लेवल से भी डबल है. नेशनल पे 30 है, ये लोग 60. देन 60.56 colleges are located in rural area. Then 10.75 colleges are exclusively for female, and only 2.7% of colleges run PhD program, and 35.04% of colleges run the PG graduate level program. So again, this is also a very nice thing that maximum colleges are located in rural area. Also, friends, we are having, there are 32.6% colleges which run only single program, out of which 84.1% are privately managed. Among these privately managed colleges, 37.4% of colleges run B.Ed course only. Then we have 78.6% colleges are privately managed, 65.2% are privately unaided, and 13.4% privately aided. Then Andhra Pradesh and Telangana have about 30% private unaided colleges, and Uttar Pradesh has 78.5 private unaided colleges, whereas Chandigarh has 8% colleges. Then when we talk about colleges, you see that the strength of the higher education in our country, it is shouldered on the private colleges. 78, it is nearly 80%. 80% colleges are privately managed, and 65.2% of private unaided. आज अनएडेड कॉलेजेस के कितने सारे प्रॉब्लम है इसमें, अगर कोई अनएडेड कॉलेजेस में होगा तो मुझसे अच्छा उसे पता है कि
there are problem of the salary, there is a problem of infrastructure. So this needs to be paid attention in the new education policy. The regulation or the regulators for the private institution need to be set up. The private institution needs to be regulated in amount of the salary they are paying to their employees, recruitment process adopted by them, reservation policy adopted by them, the examination being conducted among them, the degree awarded by them. The private unaided colleges should be regulated by the government very properly, because they are carrying maximum on their shoulder when it comes to the higher education of our country. Then 16.6% of colleges are having of enrollment of less than 100. Then gross enrollment ratio. जब हम gross enrollment ratio की बात करते हैं in higher education in India, it is 27.1. 27.1. Then, which is calculated for 18 to 23 years of age group. Then gross enrollment ratio for male population is 26.9 and for female it is 27.3. For scheduled caste it is 23.4 and for scheduled tribe it is 18.0 as compared to the national gross enrollment ratio of 27. About 80% of the students are enrolled in UG level program and 202,550 students are enrolled in PhD, which is about 0.5% of the total student enrollment. At UG level, the highest number, 32.7% of the students are enrolled in arts, humanities, and social science courses, followed by science 16%, commerce 14.9%, and engineering and technology 12.6%. Then at PhD level, maximum number of students are enrolled in engineering and technology stream, followed by science. On the other hand, at postgraduate level, maximum students are enrolled in social science stream and science come at number 2. Uttar Pradesh comes at number 1 with the highest students enrollment, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Scheduled caste students constitute to 14.7% and scheduled tribe students 5.6% of the total enrollment. 37% of students belong to the other backward class, 5.5% of students belong to Muslim minority, and 2.3% from other minority community. The foreign students come from 168 different countries from across the globe. Highest share is of Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, and Sudan. As I have told you that maximum students are coming from the underdeveloped countries. No student is coming from the developed nation. ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने मेरे लेक्चर के स्टार्ट में ही रेस किया है, जहां पर आप देखो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम नॉट इन एन व्यू दैट यहां से स्टूडेंट्स नहीं आना चाहिए, यहां से भी ऑलवेज वेलकम है, बट डेवलप जगह से भी आना चाहिए. डेवलप नेशन के स्टूडेंट्स को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज कैसे बना सकते हैं, ये हमें और आपको देखना. देन देयर आर more than 78.6% colleges running in private sector, aided and aided together. और जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वही लोग मैक्सिमम रन कर रहे हैं. Then the total number of teachers are 15,03,156, including you and me. 15 लाख टीचर्स है, सबसे बड़ा फिगर है वर्ल्ड का. और आप देखिए उसकी खूबसूरती ये है, उसकी ब्यूटी ये है कि यहां पर जो मेल फीमेल रेशियो है वो काफी अच्छा है. 57.5% आर मेल एंड 42.5% आर फीमेल. ये डेवलप नेशन ने भी आज तक के अचीव नहीं किया है कोई भी सेक्टर में. जो कॉमर्स मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें पता होगा कि जो जेंडर इक्वालिटी, इट हैज नॉट बीन अचीव्ड इन द प्राइवेट सेक्टर. बहुत डेवलप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहां पर 30-35 आया, उसके ऊपर नहीं आए. बट यू सी द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इन द टीचिंग फील्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर.
द मेल फीमेल रेशियो इज 60-40. 60-40 पकड़ते हैं हम उसे, ज्यादा नहीं भी पकड़े, बट इट इज 40. Then pupil teacher ratio in the university and college is 28 if regular mode. Enrollment is whereas for PTR for university and constituent units are 18 for regular mode. College के लिए 28 के लिए एक टीचर है और 18 के लिए यूनिवर्सिटी में एक टीचर है. बट ऑब्वियस बीए का डिग्री सबसे ज्यादा है हमारे पास में, 20 लाख है. उसके बाद में बीएससी है और बीकॉम है. पीजी लेवल पर एमए में मैक्सिमम एडमिशन, उसके फॉलोड बाय एमएससी एंड एमबीए. Then highest number of students are 20 lakhs have graduated in arts courses. At PhD level, maximum number of students outrun in science is in science stream, followed by engineering and technology. On the other hand, at PG level, maximum students outturn is observed in social science and science streams, comes at number 2. The share of PhD student is highest in state public university, 29.8. Followed by institution of national importance, deemed university and central university. Again, एक मैं मेरा personal view आपको बता रहा हूं, that cannot be generalized, is that the higher education, again, the burden of the higher education, it is totally on the state public university. आप देखिए कि 100 में से 30, 31, 30 बच्चे जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं, और 100 में से सिर्फ 14 बच्चे ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं. फिर भी एक डिस्क्रिमिनेशन जो मुझे दिखता है वो है फंडिंग का. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंडिंग ज्यादा होता है और स्टेट यूनिवर्सिटी को फंडिंग बहुत कम होता है. इफ any of you have visited the central university, they must have come up with that, they have seen that कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च के फैसिलिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो हॉस्टल्स है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो आप देखो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो क्वार्टर्स है, ये सब चीजें एट पार है विथ स्टेट यूनिवर्सिटी. स्टेट यूनिवर्सिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जैसे फंड हो रहा है वैसे ही जो है तो स्टेट यूनिवर्सिटी को भी फंड हो, स्टेट यूनिवर्सिटी को रूसा के थ्रू फंडिंग हो. ये भी एक कहीं ना कहीं पर एक लैकिना है जो हमें ओवरकम करना है. देन आप देखिए कि नंबर्स भी अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है मोर देन 700 है. 1042 में मैक्सिमम जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो पे बर्डन, यानी कि 1042 में 700 यूनिवर्सिटीज जो है वो है स्टेट यूनिवर्सिटीज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सिर्फ 48. एक दो बड़े होंगे एक साल 1.5 साल में, ये 2022 का डेटा है. बट यू सी दैट अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा फंडिंग यहां पर नहीं देखने को मिलती है जो आगे बढ़नी चाहिए. As I have told you that Bangalore urban is having maximum number of college. उसके बाद में है जयपुर, हैदराबाद, पुणे, प्रयागराज, रंगार रेड्डी, भोपाल, नागपुर, गुंटूर, गाजीपुर. और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि महाराष्ट्र से 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस, इवन सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड कॉलेजेस की जो संख्या है नगर डिस्ट्रिक्ट मिलाकर, जो है जलगांव के कुछ हिस्से और नगर डिस्ट्रिक्ट मिलाकर, इट इज अराउंड मोर देन 1200 colleges. So Pune and Nagpur from Maharashtra are having maximum number of colleges. Gender distribution, जैसे हमने टीचर्स का रेशो देखा है
वैसे ही फीमेल स्टूडेंट्स का हम रेशियो अगर देखते हैं तो आप देखिए कि पीएचडी के लिए भी 45-55, एमफिल के लिए ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, पीजी कोर्सेज के लिए भी फीमेल ज्यादा है, यूजी कोर्सेज के लिए भी फीमेल ज्यादा है, इवन पीजी डिप्लोमा के लिए ज्यादा है, डिप्लोमा के लिए कम है, सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए ज्यादा है और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए ज्यादा, यानी कि हर एक सेक्टर में फीमेल का इनरोलमेंट मेल स्टूडेंट से ज्यादा हो रहा है। और ये फिगर जो है पिछले 5-6 साल 7 साल में काफी बढ़े। देन टॉप स्टेट्स, जैसे कि अभी आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है। और यहाँ पर भी जो मेल फीमेल रेशियो है वो काफी बढ़िया है। थोड़ा सा महाराष्ट्र में 50 के ऊपर मेल परसेंटेज है, बट यूपी के अंदर आप देखिए, यूपी है, देन यू कैन गो फॉर कर्नाटका, इन बोथ द फीमेल इनरोलमेंट इज more when we compare it with the male enrollment. Then we have category wise. You see, for all categories it is very good, 50%. SC, ST, OBC सभी कैटेगरीज के लिए मेल फीमेल रेशो काफी अच्छा है। कोर्सेज वाइज अगर हम जाते हैं, कोर्सेज वाइज में आप देखिए कि पॉलिटेक्निक छोड़ दे, अगर पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंडस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री एंड होटल कैटरिंग छोड़ दी, बाकी नर्सिंग और टीचर ट्रेनिंग के लिए इट इज एट पार, मोर देन 70-75% फीमेल का इनरोलमेंट है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के अंदर भी मेल फीमेल, SC ST का जो इनरोलमेंट है वो मेल फीमेल में आप देखिए कि फीमेल में जो है वो SC में है 24.1 और जो ST में है वो 17.7 है। सो वी कैन से दैट फीमेल इनरोलमेंट इज रियली गुड एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देन फीमेल पर 100 मेल टीचर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज में 59 है, कॉलेजेस में 77 है, स्टैंड अलोन में 72 है। देन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी देखिए कि सबसे अच्छा जो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा फीमेल एनरोलमेंट इज मोर देन 50%। उसके बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट में भी सब में अच्छा है एनरोलमेंट फीमेल का। पिछले 5-7 साल का जो डेटा देखते हैं, फीमेल इनरोलमेंट इज इंक्रीजिंग। आप देखिए कि 18 लाख मेल इनरोलमेंट था, तो वहां पर फीमेल का जो इनरोलमेंट है वो 15 लाख था, और ये बढ़ते बढ़ते 15 लाख से ये भी कहीं ना कहीं 18 लाख पर आ जा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सूडान, US, नाइजीरिया, यमन, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट से मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं। USA से 1627 स्टूडेंट्स आए थे पोस्ट कोरोना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है फॉरेनर्स वो इनरोल है यूजी कोर्सेज के लिए, 74.28% जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल है इसके लिए। जस्ट अ मिनट। मैक्सिमम जो है वो है इनरोल्ड जो है वो है हमारे यूजी के लिए, और पीजी के लिए 16%। Some of the major problem faced by our Indian higher education system, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तो है कि अ सिवियर फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, जहां पर बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज है, बहुत सारे एक्ट्स रूल्स के थ्रू हमें जाना पड़ता। देन लेस एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं
आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट, आज हम ऐसे लिमिटेड बना देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि वो, आपको मैं बताऊं कि नेस्कॉम ने एक सर्वे किया 2005 में, इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। नेस्कॉम का सर्वे है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, ग्रेजुएट्स जो रहते हैं टेक्निकल एजुकेशन के। 2005 की बात बता रहा हूं, आज की भी बात नहीं बता रहा हूं आपको, आज से 20-21 साल पहले की बात बता रहा हूं। उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि 24% ग्रेजुएट्स आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर, रेस्ट ऑफ 76% आर नॉट eligible for doing the beginner's job as. So what learning based outcome based learning and cognitive skills you are having? You should, as an institution, see that these two things come up with the students. Then a rigid separation of discipline with earlier specialization and streaming of students into narrow area of study. Then limited, you can say that कि आज हमने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमारे स्टूडेंट्स को कि आपने जो दिया परोसा वही खाना। कॉमर्स वाला म्यूजिक की तरफ ध्यान नहीं देगा, म्यूजिक वाला केमिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देगा, केमिस्ट्री वाला कभी फिजिकल एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देगा, फिजिकल एजुकेशन वाला कभी जूलॉजी की तरफ ध्यान। So we have made a rigid separation of discipline, and this new education policy, it will motivate the students to take the subject of their choice. जैसे कि जब हम जाते हैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आप चले जाओ, वहां पर आपके एडमिशन के टाइम पे आपको एक मेन्यू कार्ड देते हो, जैसे खाने के रेस्टोरेंट में देते, भाई आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है वो आप टिक करें। जब आप सब्जेक्ट टिक कर देते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, वो आपके लिए सिलेबस डिजाइन करते हैं। So see that how at minute level these foreign universities are. तो हमारे पास में क्यों नहीं? हमारे पास में बस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री ले लिया, वो जिंदगी भर उसे केमिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ाना है, या केमिस्ट्री में काम करना है। वो ना कॉमर्स में जा सकता है, ना म्यूजिक में जा सकता है, ना आर्ट्स में जा सकता है। एक बच्चे ने आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर ले लिया है, वो कभी जूलॉजी में नहीं जा सकता है। सो वी हैव मेड द थिंग्स टफ फ्रॉम आवर ओन. Then limited access, particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few higher education institution that teaches in local language and limited teacher and institutional autonomy. अब देखिए कि जो एक्सेस है, अभी हम चाइना को ओवरकम कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में। पिछले 5-10 साल से चाइना की पॉपुलेशन हमेशा गिरते जा रही है और हमारी बढ़ते जा रही है। नाउ वी विल बिकम द टॉप कंट्री इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ देने वाले हैं, लेकिन एक डेवलप नेशन की जो निशानी रहती वो आती है कि वो अपना जीडीपी कितना स्पेंड करता है अपने हेल्थ पर और एजुकेशन। और ज्यादा पॉपुलेशन रहने से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर दोनों जगह भी प्रॉब्लम आती है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। आज आप, मैं नहीं भी कॉलेजेस के नाम ले तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर एक स्कूल चलता है, एक जूनियर कॉलेज चलता है, एक सीनियर कॉलेज चलता है। 3 अलग अलग बैचेस में दिन भर में मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 द बिल्डिंग इज कंटिन्यूसली यूज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं बताता हूं कि हमारे पास में आईआईटीज है, आईआईएम्स, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है। They are providing the alumni, those who are working in Google, Microsoft, ISRO, NASA, टॉप कंपनीज, एप्पल, यहाँ के जो ग्रेजुएट्स रहते हैं आईआईटीज के और आईआईएम्स के, दे आर वर्किंग अराउंड द ग्लोब। बट ऑल्सो वी आर हैविंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल नहीं, टीचर्स रेगुलरली अपॉइंटेड, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्रैक्टिकल का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिलता है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वी आर, देन लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी। एज यू कैन सी दैट मैक्सिमम टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो हैंगिंग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो अराउंड 40% सीट्स जो है तो वैकेंट है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मूविंग टुवर्ड्स अ
higher education ecosystem consisting of large multidisciplinary universities and colleges with at least one in or near every district, and with more higher education institutions across India that offer medium of instructions or program in local and Indian languages. आज आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इवन our honorable chairman of UGC, Professor Jagdish Kumar Mamidala sir, he has told that or he has come up with the circulars in which he have encouraged the teachers to convert the textbooks into the local languages. आज हमने एक मेंटालिटी बना ली है, एक माइंडसेट बना लिया है कि भाई जो टीचर का इंग्लिश अच्छा वो सबसे अच्छा टीचर, ऐसा जरूरी नहीं. It is a good thing. It is a global language. It is a globally used language. It is good. I'm not criticizing English. But if your English is good, then only you are a good teacher. It is a question mark. You go to the European countries. In European countries, you will see that they will not adopt English. They will teach engineering. They will teach medical in their own local language. So that is also one of the basic concept of the new education policy, where the students should learn in their mother tongues. School education, higher education, they should learn in their mother tongue. Then moving towards more multidisciplinary undergraduate program, then moving towards faculty and institutional autonomy, then revamping curriculum, pedagogy, assessment and student support for enhanced student experiences. Revamping curriculum. आज हम में से कई लोग इसमें बीओएस मेंबर्स है, बीओएस के चेयरमैन हैं, मैं भी एक बीओएस का मेंबर हूं, कावित्री बैनाबाई नॉर्थ महाराष्ट्र से जलगांव में. आज हम देखिए कि हम जो सिलेबस डिजाइन करते हैं, हम कितना इंडस्ट्री वालों का इनपुट लेते हैं. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. आज इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट, व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स एंड व्हाट ग्रेजुएट्स वी आर प्रोवाइडिंग टू दोज इंडस्ट्रीज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट एक होती है और हम ग्रेजुएट एक दे. आज तो एआई का जमाना. यू विल सी दैट in future 40% job loss will be there due to AI. So why don't we teach our students into AI? Still in BCom we are teaching the student how to run a tally software, how Word, Excel, PowerPoint work. These are the very basic things of computers. What is a student should learn? Student should adopt a global citizenship approach. आज स्टूडेंट को ये पूछो आपकी यूक्रेन और रशिया का वॉर क्यों हुआ है, he will not know. उनसे आप ये पूछो कि इजराइल और फलस्तीन का क्या प्रॉब्लम है, दे विल नॉट नो. उनसे आप पूछो कि पेट्रो डॉलर क्या होता है, उन्हें पता है. डॉलर का रेट कैसे डिफाइन होता है, तो ये भी पता नहीं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सर्व द वर्ल्ड. आज आप देखिए कि भारत देश की जो जनसंख्या है उसमें 40 बिलो 40 साल के नीचे की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा आने वाले दिनों में भारत में रहने वाली है. और भारत देश ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपने मैन पावर सप्लाई करना है, टेक्निकल मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, अनस्किल्ड मैन पावर. सो वी विल बी अ विश्व गुरु. वी विल rule the world, and it is in our hand. As a higher education stakeholders, we have to see that how we can make student effective at global, how student can work with his own skills at global level. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने देखनी है. तो करिकुलम डिजाइनिंग में भी आपने इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन लेना है, इंडस्ट्री वालों को इनवाइट करना है. pedagogy, assessment, student support for students' experience. Reaffirming the integrity of faculty and institutional leadership positioning through merit appointment and career progressions based on teaching, research and service. Establishment of National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research to actively seed research in universities and colleges. Then governance of higher education institution by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy.
Then lad but tight regulator by the single regulator, वो तो आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन के बाद में आपको देखने को मिलने वाला है. Then increased access to equity inclusion through a range of measures, including great opportunities for outstanding public education, scholarship by private philanthropic universities for disadvantaged and unprivileged students, online education and open distance learning, and all infrastructure and learning material accessible and available to the learner's disability. So I will take a break of 15 to 20 minutes. Before going to the break, any question on these previous slides? Anyone want to answer? Question? Any questions? I would like to answer on the previous slides. Participants, I'm audible? Yes, sir. आपके कोई प्रश्न है? इतनी जो स्लाइड्स हुई है हमारी, उसके ऊपर 1.5 घंटे में जो स्लाइड्स हुई है, उसके आपके ऊपर कोई प्रश्न विचार है तो आप पूछ सकते हो. उसके बाद में हम ब्रेक में जाएंगे. So no questions are there. So we will take a break of 15 to 20 minutes. Yes, okay. 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे प्लीज. Okay, sir.
कशाची आपण फ्रीमन नाही का जाऊ शकत आम्हाला स्कूल कॉलेजच्या बद्दल पण नाही सांगितलं Done speaking. Then night. Now speaking. Done speaking it. DONE. कोण लिहिलं? काय माहिती तिकडे एक सर्कल आहे त्याच्यात पूर्ण ब्ल्यू कलर आहे आणि डन स्पीकिंग असं आहे Right. Within 5 minutes, I will start, friends. हम do
So, friends, I would like to welcome you all for this second session. So, friends, as discussed earlier, the higher education scenario, and still those things will be continued by me. My screen is visible. Can anyone tell me? Yes, sir, visible. Okay, okay. Thank you. Thank you. So, scenario of Indian scenario of an university. You see that faculty training program needs to be there. Then financial constraints are there in our universities and colleges. To quote one example, I would like to say here is of the Harvard University. You see that the budget of Harvard University is greater than the higher education budget of our whole country. आज आप देखिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो है $4.2 बिलियन का 2013 का बता रहा हूं. At that time 73 rupees was dollar and it was going around 30,000 crores, while as our entire higher education budget for 18-19 was 26,210 crores, which includes technical education, IITs, NITs, and IIMs. So Harvard University's annual budget is more than the technical education expenses of our whole country. Kindly take a note of it. Affiliation system. जैसा हम बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने जो है हमारा जो थैंक यू और सॉरी उन्होंने देकर गया, वैसे ही एक चीज ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज कंट्रीज को देकर गए, ये साउथ एशियन कंट्रीज को, वो है एफिलिएशन सिस्टम. You will see that India is the one of the 4 countries in the world where colleges are affiliated to a particular universities. The other countries are Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. Thus, affiliation system, far from being universal phenomenon, is confined to the repents of the erstwhile British Empire. इसका सबसे बड़ा लैकिना मैं आपको बताता हूं. मैं मेरी यूनिवर्सिटी का लैकिना बताता हूं आपको. अब देखिए कि माय यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन छत्रपति संभाजी नगर. फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट नेम वाज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, if anyone knows that. And the last affiliated college of my university is in the Usmanabad district, which is around 400 kilometers. So if a student wants to come to any administrative work, he can't do that administrative work at the sub center. सब सेंटर पे तो बहुत मुश्किल है काम, उसे मेन सेंटर पर ही आना पड़ता है. और मेन सेंटर पे छोटे से काम के लिए उसे 400 किलोमीटर जाना और 400 किलोमीटर आना. Then the examination department is having the load. Then affiliation system is having the load on the universities. Lack of manpower is there. You see that affiliation system has killed the entire higher education system. And the current objective of the new education policy is to see off this education affiliation system, जहां पर affiliation system जो है वो completely phased out हो जाएगा. आने वाले 10 से 15 साल में आपको एक भी affiliation system देखने को नहीं मिलेगा. Again, the NEP objective is
to increase 50% gross enrollment ratio by 2035, and also to build world-class university and to achieve high global ranking. एक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 50% हमारा जाना है 2035 का, जो 27 है, 27 पॉइंट समथिंग, तो ये जाना है 50% पे. इट इज नियरली डबलिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 and to build the world class universities. As I have pointed out in my earlier slides, that as a higher education system, third largest higher education system in the entire world, but still we can see that no university appears in the top 100 universities around the globe. So it is really a thing of concern for us, where we have to see that how the world class university can be built to achieve high global rank. It can be in terms of infrastructure, it can be in terms of teaching, learning methodology, assessment, it can be in terms of the course design. So there are several factors which a university have to adopt for becoming a world-class university. Then we are having 360-degree NEP outcomes. You see that ability to acquire and apply fundamental principles of domain area, then capability to communicate effectively, then we have acquisition of technical competencies in specialized area of discipline, then ability to identify, formulate, and module problems and find solution, a system-based approach, then ability to conduct investigation and research on societal problems. जैसे कि मैंने आपको बताया कि societal problems जो है, सामाजिक कार्य जो है, सामाजिक मसले जो है, वो आपको और हमने क्लियर करने हैं. ये भी एक कहीं ना कहीं मेजर रोल है एनईपी का. Then understanding of the importance of sustainability and cost effectiveness in designing and development of solution. Then understanding and commitment to professional and ethical responsibility. Then ability to work effectively as an individual and as a member leader in a team. Ability to build multi-skilled person with good domain knowledge. Then management, leadership, and entrepreneurial skills. Awareness of social, cultural, global, and environmental responsibility, and capability and enthusiasm for self-improvement through continuous professional development and lifelong learning. Again, another thing that of the new education policy, we have seen in that we have a 3-year and 4-year degree program with multiple entry and exit. आज आप देखिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर डिप्लोमा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा. देन अगर आप सेकंड ईयर पास करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर करते हो तो आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी. देन फॉर 4 years यूजी डिग्री, you if you go at the 4 year, you will get a honors degree, and 1 credit is of 1 hour of teaching or 2 hours of practical lecture or field work. The state and central and state will work together to increase the public investment in education sector, which will reach to 6% of GDP at the earliest. आज जो 2-3% है, इसे भी कहीं ना कहीं डबल करना है. Again, I would like to highlight what I have said in my earlier part of my lecture, is that friends की कोई भी डेवलप नेशन आप उठा के देख लो, मैक्सिमम जीडीपी का हिस्सा वो अपने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन
सेक्टर पर ही लगवाते हैं। 6% का टारगेट है हमारा। 6% जीडीपी होना, जो करंट 3% है। देन एक्सेस, इक्विटी, अवेलेबिलिटी एंड फेयरनेस। आप देखिए कि दिस इज द थर्ड national education policy after the year 1986 and the year 1992. So it is a reform after many years that all of us are seeing and all of us will implement. Then we have just a minute, academic bank of credit. You see that it has been created as a digital recognition award for students' academic performance. Academic Bank of Credit can allow university to verify an institution's credit, or school can use it to reward or recognize students. It can help to track of the credit each student has earned over the time. According to NEP, learning should be holistic, joyful, stress-free, and lifelong learning process. Then NEP focuses on critical thinking, discovery, inquiry, discussion, teaching based on analysis and holistic learning methods. Then regulators for higher education will be light but tight. Then focus on online learning to ensure that students are educated to the highest standard. In the new system, e-learning will be expanded to online courses which will provide flexibility in terms of location and time for students. Again, जब हम बात करते हैं online education, we were very reluctant. We were hesitating to adopt the online education. प्री कोरोना की अगर बात करें तो आप ही मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग जो थे वो गूगल फॉर्म यूज करते, हम में से कितने लोग थे जो यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे, हम में से कितने लोग थे जो जूम मीटिंग का इस्तेमाल करते। ऑल दीज थिंग्स which we would have learned in coming 10 years, the COVID-19 has taught us all those things in 6 months. In the period span of 6 months, all of us have adopted the online education. And that will continue, friend. Even if it will be in a hybrid mode, the online education will continue. हाइब्रिड मोड पे क्यों था? स्वयं के काफी सारे अच्छे कोर्सेस है. डे बिफोर यस्टरडे ओनली वन मीटिंग ऑफ द स्वयं coordinators were discussed. In that meeting, it was discussed that to add more courses. There are many n number of courses. Anybody can enroll. No registration fees is there for those courses. And these courses are providing high quality material, YouTube lectures, PDFs. So online education system is accessible to all nowadays, and it can be targeted to the masses. Then by the end of 2040, the aim that all university will become multidisciplinary institution. Each of them will have 3,000 or more students. Then college affiliation will be phased off, as I have told you, in the coming next 15 years. Then at least one oversized multidisciplinary higher education institution should be built in or every district by 2030. Then this is one of the ways we can make our school more connected to the community and provide them with growth opportunity. The goal is to help to create 100% youth and adult literacy. Choice-based credit system. One credit is of 1 hour of teaching, 2 hours of practical. You see that if you will complete the credit, it will go into the academic bank, and from any colleges you can switch to any colleges. Mobility of student will be more. जो आज हमने आपने नहीं देखे हैं कि स्टूडेंट की मोबिलिटी होंगी, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट आराम से जा पाएंगे. Then NEP and internationalization. You see that in NEP, more
focus is given on the internationalization. So how we can go at international level? As a higher education institution, how we can go at international level, or how we can create an internationalization at home. You see that NEP is built on foundation pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability recommends path-breaking reforms that aim at paradigm shift by equipping our student, teacher, and educational institution with the right competency and capabilities, and creating and enabling reinvigorated education ecosystem for vibrant New India. The NEP extensively focuses on attending the highest global standard in the quality of higher education. Further, it reinforces the need to attract greater number of international students and to achieve the goal of internationalization at home. This policy appreciates the critical need to promote India as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as a Vishwaguru. So how we can achieve internationalization at home? First is capacity building in international initiatives, then collaborative communication between Indian and international faculties. ये जो आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि जो हमने देखा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हमारे कोलैबोरेशन काफी कम. Even giving the example of my university, Department of Physics of our university, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University. अगर आप में से कोई है फिजिक्स के है और हमारी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, they must be knowing that I have seen the faculty members from this university having a collaboration with the University of South Korea, where they have developed a battery which on a single charge, a mobile battery on a single charge can run up to 5 years. 5 साल तक के वो चल सकती. तो ऐसे कोलैबोरेशन हमें भी आगे बढ़ाना है. इवन आई हैव बीन एसोसिएटेड with merge project of the European Union from past 2 to 3 years. Just now we have completed that merge project. So that will give you a first-hand experience of how the higher education is at international level. Then international dimension to curricula in science, social science, and beyond spark a deeper reflect about the course content and effective pedagogy to promote better learning outcome for all students. Then other areas of strength in India such as science, technology, engineering, and mathematics, computer science, gaming should be tied up with entrepreneurship, apprenticeship to make them attractive for foreign students. Then quality residential facility to students from abroad to ensure effective living condition and learning environment to international student. अभी फिर से मैं कोट करूंगा हमारी ही यूनिवर्सिटी का एग्जांपल. Here we are giving the student world class facility. फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसेस अलग होता है. दिसंबर और जून के महीने में सिंगल पोर्टल पर सभी चीजें अवेलेबल है. नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड. इवन अ पर्सन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री कैन अपलोड हिज और हर डॉक्यूमेंट, कैन opt for a course of her or his choice, and we will verify the documents, and after shortlisting him we will give him a call. So before applying for visa or before applying for any other formalities between two diplomats, the foreign student can register himself here in Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University in the month of June and December. Twice the portal is open, and we are providing them world-class facilities in their hostels. They are also being provided by the scholarship from ICSSR. So that has increased the number of foreign students in our universities. Then,
integrating incoming international students with local community, including assigning faculty mentors, host families and students buddies. आपको उन्हें अच्छे से इंडक्ट करना है, लोकल अवेयरनेस करना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, पॉजिटिव सेफ. अभी आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि 3 भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है अमेरिका के अंदर, और उसमें से एक भारतीय छात्र तो उसने अपने प्राण गंवा दिए हैं. So we can see that we should create a safe environment. Then offering local language course and other bridge courses as needed. Then short-term non-degree niche courses to create global perception about our core competency in yoga, philosophy, Ayurveda, health, Sanskrit, Vastu Shastra. Then courses and programs in subjects such as knowledge of India's language, art, history, culture, global context, global literacy. Then incorporate internationalization, objective to the institution's border quality, assurance, process of teaching and learning, community engagement and students satisfaction. तो आप देखिए कि हमारी जो ये है, हमारी जो ये है कि हमारा जो कोर है योगा, फिलॉसफी, आयुर्वेद. आज योगा आप देखिए कि वर्ल्ड ने योगा अडॉप्ट किया, इंटरनेशनल योगा डे बन गया है, बट हमने योगा भूल गए. आज आयुर्वेदा को वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है, बट हम आयुर्वेदा भूल गए. आज काफी सारे जो रिच कल्चर जो थे हम भूलते जा रहे हैं, फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं. इसके लिए आईकेएस जो गवर्नमेंट ने लेकर आया है, यूजीसी ने जो लेकर आया है, IKS, that will be a mandatory part in the coming days. So we should highlight our core strength. Then incorporate internationalization objective into institutions' border quality assurance process for teaching and learning, community engagement and students satisfaction. Then credit recognition under tuning agreement. Indian higher education institutions are encouraged to offer degree program under tuning arrangements. As per NEP suggests, this tuning agreement will give effect to credit recognition. Credit recognition transfer means credit confined by the foreign higher education institution to be recognized, quantified, and included towards the credit requirement for a program delivered by an Indian higher education institution under a mutual union agreement. The collaborating Indian higher education institution may enter into agreement MOU with foreign higher education institution for recognizing of credit under tuning agreements. In case of an institution affiliated to university, NOC to be obtained from the affiliating university, the institution concerned, affiliating university, and foreign higher education institutions shall enter into triplicate agreement MOU for the purpose. In this, the existing curricula may be supplemented by additional curricula of collaborating university. The joint course structure can be worked out on the basis of need of assessment and to complement the course structure of corresponding semesters. The degree offered under such twinning program shall be awarded by the Indian higher education institution. The credit obtained at foreign higher education institution shall be reflected in the transcript. Then the Indian higher education institution shall ensure that the credit earned by the student from the foreign higher education institution should not be overlapping course content curriculum. And any degree to be awarded under tuning program must be conformantly with the provision of section 22(3) of the UGC Act. Kindly take a note of it. And shall also be conformed with norms and standards required. Any course or program which jeopardize the national interest shall not be allowed to offered in India. Then the higher education institution should also make provision for exit pathway for students who are unable to failing to get a secure visa. Then also the Indian higher education institutions will provide periodical reports
annually giving details of number of student admitted, program conducted, number of student awarded degree, and any other such information. Global citizen approach. अभी मैंने जैसा आपको बताया कि now as the population of our country is less than 40 जो एज के जो लोग हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो भारत देश में. And you see that we will lead the world in each and every sector in the coming years. So creating a student, a manpower for the world who should have a global citizen approach. He will not be limited to India when he will work. He will work for a multinational company, a global company, or he will go and work in a foreign country. So knowing the global awareness or global knowledge for a student is very important. Then higher education institution may take the global citizen approach at their own institution, developing knowledge, skills, and values in our next generation, which they need to engage with the world and believe that we can make a difference. Then empowering student with understanding of how the world works economically, politically, socially, culturally, technologically, and ecologically. अच्छा, आप इसमें देखिए कि पेट्रो डॉलर क्या है. अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट को हम पूछते हैं व्हाट इज पेट्रो डॉलर, हाउ द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर डिसाइडेड एट वर्ल्ड, व्हाट इज NATO, what is the dispute between Ukraine and Russia, what is IOC, what is World Bank, how it works, how the rate of gold is decided. These are the many things that will be a question mark to all persons, students. So ये सब awareness आपको लेकर आना है. Then higher education institution may endeavor to inculcate essential values such as diversity, interdependence, empathy, perspective in students. Engaging with community services with special focus in and around the higher education institution will contribute at a range of level from local to global. Then credit-based project and courses in the areas of community engagement, environmental education, and value-based education. Then short courses and workshop on human and constitutional value, respect of others, cleanness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, responsibility, pulparism, equality, and justice. Inculcate skills in students such as critical thinking, communication, technology skills, cross-culture awareness, adaptability. Then global citizen harness these knowledge, values, skills are uniquely positioned to contribute in multiple contexts, local, national, international. They will be extremely critical for building a more sustainable, resilient, and compensate world in the 21st century. Academic and research collaboration at world level. I'm talking about at global level. Student exchange program for short-term duration visit to reputed universities can be done. Then semester abroad program under tuning agreement, 1 से 2 semester हम किसी को बाहर भेज सकते हैं. Then faculty members are encouraged to get exposed to foreign university in exchange program, short-term projects. Many short-term projects of Eromandas merge project run by Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University in many European countries are my colleagues have been there under this faculty exchange program. Then expanding strategic research partnership with international higher education institution. Then organizing academic and research workshop, seminars and conferences. अभी आप देखिए कि जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स है ऑनलाइन लेवल पे तो हम बिल्कुल ले ही सकते हैं. Then collaborating with alumni, both student and faculty at various foreign universities for academic and research activities. आज आप देखिए कि हम लोग जो है हम हमारे जो ये है हमारे जो एलिमिनी है हमारा उन पर ध्यान ही नहीं, हमारे एलिमिनी पर हमारा ध्यान ही नहीं है. हम हमारा स्टूडेंट पास आउट होता है, वी विल नेवर मॉनिटर.
get connected to the students, those who are working in abroad, get connected to the faculty members who has left your institution are there working abroad. Try to make a connection with them. Try to build a brand of your institution. Then establishment of chairs abroad in the name of eminent scientists, scholars, and philosophers. How can a brand build abroad? Higher education institutions are encouraged to undertake brand building exercise to make India their institution attractive study destination, preparing country specific report based on academic and market research on priorities of prospective students. Accordingly, country-specific strategies may be formulated and implemented with the help of government and regulatory bodies to attract those prospective students to study in India. Then higher education institutions are encouraged to set off offshore campus in order to expand the outreach of institution and build the image of India as an international study destination. Institutions of immense have been permitted to have offshore campus dissemination of information on education system, accreditation, ranking process in India. Then popularizing the language courses, bridge courses, short-term degree niche courses on Indian art, culture, yoga, Ayurveda, Buddhism. Then extensive use of digital platform and virtual mode for such brand building. Then alumni connect can be there. You can organize an alumni connect. Then also you can establish an office for international affairs. Then what are the challenges of our higher education system? Gap between supply and demand. In higher education, India has a low rate of enrollment. Gross enrollment is 27% only, which needs to be updated. Then lack of quality research. There is a shortage of funding from top Indian institutions such as IITs, IIMs, and other institutions of national importance. Our budget for research is not underspent due to insufficient good quality research. Due to the limited focus on research and internationalization, very few Indian higher education institutions are globally recognized. Then number of research paper published in India has increased continuously for past decade, but reflected low in citation impact if compared with the countries like Germany, US, France, and China. Then Indian higher education is facing with the problem of poor quality of curriculum in the most what you will say higher education institution curriculum is outdated and irrelevant. ये तो सबसे बड़ा problem है हमारा. Then shortage of faculty भी है. 40% faculty short है central universities में. Then inadequate infrastructure है. मैंने भी ये भी आपको बताया कि कैसे कि एक ही कॉलेज में स्कूल भी रन होता है, जूनियर कॉलेज भी रन होता है और सीनियर कॉलेज भी रन होता है. वेरी लेस कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री. ये भी हमें कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करना है हमारे अपने आप को कि हम लोग इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट कितना बढ़ा सकते हैं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट वो हम फुलफिल करें. इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है वो हम फुलफिल करें और इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड मैन पावर है वो हम निकालें. लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट. अभी आप देखो कि नेस्कॉम का सर्वे 2005 का मैं आपको बताया कि वहां पर उन्होंने जब सर्वे किया इंजीनियरिंग में तो पता चला कि 24% ही जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर द जॉब्स. सो हियर आई कम टू एंड ऑफ माय लेक्चर एंड बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड रिक्वेस्ट all of you to start their camera and we can have an interaction for 15 to 20 minutes now. Participants also open your cameras please. सभी लोग कैमरा ओपन करें, हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं. Those who are comfortable. This session is open for your questions. So I would invite you to ask the question
any language, Hindi, English, Marathi, in 3 language I will be very much comfortable. तुम्हाला मराठीमध्ये काही विचारायचं मराठीमध्ये विचार करा, तुम्ही विचारा प्रश्न, किंवा आपको अगर हिंदी में पूछना है तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं. So if no questions are there, we can come to the end of this session. Sir, I have one question. Yes, ma'am. Yes, If ma'am. if in coming time, as you said, कि many of the colleges, affiliated colleges are going to be autonomous. So what will be the role of university then, sir? University will monitor. It will not be a complete autonomy, but autonomy will be there for conducting exam, for having their own board of studies, for setting their own research papers, for awarding the degree. But your regulation, your recruitment, your salaries will be with the government and the universities. And sir, there will be no hold on curriculum and courses then? Courses, curriculum you can design on your own. No, you can have your own BOS. आपके पास में भी कोई एक ऑटोनॉमस कॉलेज होगा तो देखो कि उनका खुद का मुंबई में काफी सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, तो आप देखिए कि उनका खुद का एक बोर्ड ऑफ स्टडी रहता है और वो खुद का सिलेबस खुद डिजाइन करते हैं. इवन इन द नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नियर टू पुणे, दे आर हैविंग देयर मेनी कॉलेजेस विच आर ऑटोनॉमस, और वो खुद का एक सिलेबस खुद बनाते हैं. Sir, then will be there any differences in that priorities wise or some content wise? The syllabus will be same or different, or नहीं, as you know, syllabus will be as per your choice, as per the choice of the board of studies. अभी इसमें क्या होगा कि ऑटोनोमस कॉलेजेस होने के बाद में आपको आपका एक ब्रांड बिल्ड करना है. आप कहाँ से हो अंबिका मैम? यू आर फ्रॉम? sir, I am from Sant Gadge Baba Amravati University. अच्छा, I am assistant फ्रॉम professor in महाराष्ट्र. computer science. अभी महाराष्ट्र में आपने DY पाटिल नाम सुना होगा, Yeah, सिम्बॉयसिस नाम सुना है आपने, yeah, जमनालाल बजाज नाम सुना है आपने. yeah. So why you have heard these names? These are the brands. तो ये ब्रांड कैसे बने? जब इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन दिया, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड किया. तो आपके इंस्टीट्यूशन को कंपीट अगर करना है DY पाटिल से, MGM से, सिम्बॉयसिस से, या फिर जो जमनालाल बजाज से, तो आपके इंस्टीट्यूशन को भी क्वालिटी कोर्सेज, क्वालिटी टीचिंग और रिक्रूटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो डिफरेंसेस तो आएंगे, आप खुद जिम्मेदार बन जाओगे, क्योंकि अगर आपको सरवाइव करना रहेगा तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना ही पड़ेगी, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देना ही पड़ेगा. Then the difference between state university and private university will be same as today, or will be the scenario will be different? नहीं, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ डिफरेंस ही नहीं बचेगा ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं बचेगा कि प्राइवेट और पब्लिक का. सिर्फ आपका सैलरी कंपोनेंट छोड़कर बाकी सब चीजें तो प्राइवेट जैसे ही हो जाएंगे. Okay, sir. I will contact you in future if I have any query. Can you share your details? Yes, I will text my number here in the chat box, so all of you can take. हेलो सर. Yes. मैं चंद्रपुर से बात कर रहा हूँ सर. जी आड़े जी, बोलिए. सर, जैसे इसी को धागा पकड़ के मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ. जी सर. जैसे रूरल एरिया में आर्ट के कॉलेजेस है, मैं सोशल वर्क कॉलेज से बिलोंग करता हूँ सर. जी. इसका कोलैबोरेशन कैसे होगा सर? देखिए, आप तो सोशल वर्क कॉलेज से न्यू तो ये आप NEP बहुत सारे पॉलिसी. कोलैबोरेशन कर सकते हो NGO से.
यानी कि जो ओल्ड एज होम से आप कोलैबोरेट कर सकते हो, आप जो है तो जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो काम करने वाले एनजीओज है उनके से आप कोलैबोरेट कर सकते हो। यानी कि सोशल वर्क इज, इट इज सोशल, यानी कि वो उसमें वर्ड ही सोशल, यानी कि हर चीज में आपका रिक्वायरमेंट है, सोशल साइंटिस्ट का रिक्वायरमेंट। तो आप आपके स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आपके लिए तो काफी सारे एम्पल अपॉर्चुनिटीज है सर। आज हॉस्पिटल्स में सोशल वर्क के लोग लगते हैं, कंपनीज के अंदर सर सोशल वर्क के लोग लगते हैं। सर बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया सर, एनी ग्रेजुएशन का पोस्टिंग किया ना सर, मेडिकल सोशल वर्कर एज। अच्छा, वो एनी ग्रेजुएट कर दिया, ये मेरे नॉलेज में हाँ नहीं था। हाँ हाँ, वैसा है सर, अभी लेकिन वो भी रिक्रूट। एमएसडब्ल्यू के लिए तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, और आज हमें तो काफी सारा उसमें काम अभी बाकी है सोशल वर्क में। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है सर वो, कि वो आप सर, बहुत सारे एनजीओ से कोलैबोरेट कर सकते हो और बहुत सारा रिसर्च वर्क आप कर सकते हो सर। हाँ ये तो है। हाँ, सर एज ए प्रैक्टिकल वर्क जो हमारा फील्ड वर्क चलता है ना, तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही रहता है। जैसे अलग बराबर। अलग स्पेशलाइजेशन है। जैसे हमारे यहाँ 3 स्पेशलाइजेशन है, एचआर है, मेडिकल एंड साइकेट्रिक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट है। इससे हम्म रिलेटेड जो जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, तो हम वहीं पे प्रैक्टिकल बेस पे ये काम करते हैं। जी। लेकिन न्यू पॉलिसी में सोशल वर्क का बच्चा यदि आर्ट का सब्जेक्ट लेना चाहता है ले सकते तो हैं। वो। देखिए सर, अभी हम जो मैं लेक्चर में पूरा बता रहा हूँ वो सही भी बात है, कि अभी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन के लिए जाओगे बच्चे को लेकर, तो मेन्यू कार्ड देते हैं, इसके अंदर टिक करो आपको सब्जेक्ट कौन से पसंद। हम्म लेकिन हमारे पास में क्या है, हम प्रोस्पेक्टस देते हैं उसके हाथ में, ये सब्जेक्ट तुझे पढ़ना है। तो ये डिफरेंस उनमें और हमें है सर। और ये डिफरेंस कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ओवरकम, कि सोशल वर्क का जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी आना चाहिए ना, अगर वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के पास में अगर जाता है। वो हम्म लिमिटेड सोसाइटी से क्यों रहना चाहिए, वो उससे केमिकल का भी नॉलेज रहना है, ड्रग्स का भी नॉलेज रहना चाहिए, मेडिकल का भी उसे नॉलेज रहना चाहिए, म्यूजिक का भी वो उसे सर, नॉलेज रहना चाहिए। ये प्राथमिक स्तर पर होगा सर, लेकिन उसका ज्ञान जो है, लेकिन जी। स्पेशलिटी नहीं बनेगा ना सर। नहीं, स्पेशलिटी नहीं तो स्पेशलिटी तो एक ही रहेगा, लेकिन उससे नॉलेज भी तो रहना है। आज मान लो कि मेरा स्पेशलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, मेरा फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन। जब मैंने 12वीं 11वीं में जब मैंने फाइनेंस लिया, तो मैंने मेरा पीएचडी तक के उसे छोड़ा नहीं। हम लोग इतने रेजिट है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। यानी कि हम्म मैंने 10 साल मैंने वो फाइनेंस से कभी, यानी कि हर चीज फाइनेंस, बीकॉम कर रहे फाइनेंस में, एमकॉम कर रहे फाइनेंस में, एमबीए कर रहे फाइनेंस में, पीएचडी कर रहे फाइनेंस में, एमफिल कर रहे फाइनेंस में कर रहे। तो हम जो हम्म एकदम लिमिटेड हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी थिंकिंग हमें चेंज करने की जरूरत है। हम्म, ठीक है सर, ओके। हेलो सर। यस गुप्ता। हेलो। यस गुप्ता हाँ सर। सर। सर मैं एक विचार करता हूँ कि जो जी। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात तो करते हैं, दूसरी तरफ आपके इस उद्बोधन में भी आपने बताया कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर जी। काफी कम है। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने पर, और दूसरा हम ऊपर से मैंने जो हाई लेवल से डाउन, अप से डाउन लेवल की तरफ हायर एजुकेशन पॉलिसी को ले जा रहे हैं, मैंने एजुकेशन पॉलिसी को। तो हम्म आप इस संबंध में क्या कहेंगे कि क्या ये हायर एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी का है टोटल, तो टोटल एजुकेशन पॉलिसी कुछ फ्रूटफुल होगी क्या ऐसे में? और जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम्म विशेष रूप से कहें हम रूरल में क्या रहता है कि घर पर ही उसके कुछ इस तरह के काम रहते हैं कि वो वैसे ही अपने घर के कामों में उलझा हुआ रहता है। तो ऐसी दशा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने जो अलग अलग प्रकार की चीजें दे दी हैं, क्या ये सब हो पाएंगी? अभी आप देखिए सर, मैं तो मेरे लेक्चर में बताया कि हम ये सिर्फ अभी करंट गवर्नमेंट का फेलियर था, या उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का फेलियर था, या उसके पहले किसी और जी। गवर्नमेंट का फेलियर था, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ हाँ। 1986 से 1986 से लेकर आज तक के हमने जो टारगेट रखा जीडीपी का, वो हमने टारगेट हम्म। कभी अचीव नहीं कर पाए सर। जी। 1986 से बता रहा हूँ, बराबर। पहली चीज तो ये, वो आज भी नहीं हुआ, आगे होगा नहीं होगा ये भगवान जाने, हम बता नहीं सकते उसमें, लेकिन होना चाहिए। हम्म अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें, जैसे कि यूएस की, चाइना की अगर हम बात करते हैं, हम अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है सर, हम डेवलप नहीं हुए हैं। वी आर स्टिल अंडर डेवलप कंट्री। डेवलप्ड नेशन जो है, डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। हम
तो जीडीपी पे जब हम 6% का हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे तो बिल्कुल हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। और जब हम जीडीपी 6% एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ओवरकम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, मैं खुद देखता हूं, महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र के अंदर रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल प्रॉब्लम है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूं और हमारा ध्यान भी जो है वो रूरल एरिया पर ही रहना चाहिए एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम भारत और इंडिया दो चीजों में हम डिवाइडेड, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया। तो रूरल में हमारी पॉपुलेशन आज भी कम है सर। जी सर। 2035 में आने के बाद में वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, लेकिन रूरल एरिया में आज भी पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है और कॉलेजेस की संख्या कम है। आज भी आदिवासी जिलों में टीचर्स की कमी है। महाराष्ट्र में नंदुरबार एक एरिया है, वहां पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर टीचर्स की कमी है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है। और उसके अंदर उन्होंने एक प्रावधान लेकर आया था, यूपीए गवर्नमेंट से है वो, रूसा का, और रूसा के तहत फंडिंग मिल रही है ये, लेकिन बढ़ना चाहिए फंडिंग रूसा के तहत जो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को जो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी मोर क्यूरीज? Good evening, sir. Am I audible? Yes, Vishaka ma'am, you're audible. Yes, sir. Sir, I'm from DJ Sangvi College of Engineering from Mumbai, and we have started implementing from 23-24 the academics for NEP, actually 22-23 itself. But everything else is fine with us. But the problem which we think we will be facing is about the internship for 1 week, which is supposed to be given in NEP in 7th semester for the students. Being in Mumbai area also, I'm from EXTC department, Electronics and Telecommunication department. So it's very hard for us to find out core EXTC engineering internships for the students. Because in placements also what we find is the companies which are hardly 1 or 2 companies are there which offer jobs in core EXTC subjects, So is there any facility given by government or some help given by any institution or any kind of body which helps colleges to get good core internships for the students, sir? You see, ma'am, in this view, because I have also been worked as a faculty for MBA students, so what I have observed, the same problem comes with, अब आप तो देखिए कि मुंबई से और मुंबई में आप ये प्रॉब्लम बता रही हो, बट इन्हें मैन पावर भी चाहिए, क्वालिटी मैन पावर भी चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू ट्रेन देम. Exactly, sir. Yes. Exactly. They want quality manpower. They will require a person who is a fresher, but he should do the job immediately, because degree is a piece of a paper. What a person learn is on field. I have seen closely medical field. I have seen closely the engineering field. You will get a theoretical knowledge. You will get some inputs of 20 to 30% on how to do the job. But your experience will teach you how to become perfect and do good job. So these things should be made under CSR. CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके तहत हम कंपनीज को, जैसा हमने CSR मैंडेटरी किया है, वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स की संख्या हम मैंडेटरी करवा सकते हैं. So just actually, sorry to disturb you, sir. But what we feel is, as government is making compulsory for the institutes to implement NEP, something like NEP department or some NEP related, division should be there compulsory for industries also. Then only this collaboration is possible. But they are making only institutes compulsory to make NEP, and I'm being from Mumbai. I'm being from Juhu area. Our college is in Juhu area, which is like our college students are very good. They get very good employment, but this internship, which is there, finally EXTC students also has to take an coding job or some computer IT related jobs. When actually I feel the need of EXTC students also should be there in the industries. No? So as they are implementing NEP for institutes, I feel it should be implemented for industries also. Make it compulsory for the industry, but they can
have an amendment in Companies Act 1956. In that, one part is their corporate social responsibility, where the company needs to spend 2% of their earning on the social welfare schemes. So they can make a provision where training the students, giving them stipends, can be included as a part of CS. It is my suggestion, and we are very small to give suggestion to the government, but think tanks are there, and they can implement on their own. But this is a major problem. As a faculty member of management science, what I have seen that companies are not ready. Even myself, when I was pursuing my MBA, at that time for implant training, I went to Garware, बट दे वर नॉट रेडी टू टेक मी. वो बोले कि भाई आपको सर्टिफिकेट होना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको आने नहीं देंगे, यहाँ पर हादसा हो सकता है, आप मशीनरी के पास में रहोगे, कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आप हमारे कुछ सीक्रेट्स लेकर जाके कहीं और दे दोगे. दे आर नॉट रेडी. इवन आई हैव डन a PhD in finance at the time of recession. No broker was ready to entertain me while collecting the data. उन्हें ऐसा लगता था कि भाई मेरे क्लाइंट्स का जो डेटा रहेगा वो ये कहीं पर ले जाकर सेल आउट करें. सो डूइंग रिसर्च इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, मैं तो रिसर्च की भी बताऊंगा कि फर्स्ट हैंड रिसर्च के लिए भी जब हम कंपनीज में बैंक्स में जाते हैं, दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद अस बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर देम. वी आर क्रिएटिंग सोल्यूशन दैट विल बी हेल्पफुल टू देम इन नियर फ्यूचर. So I hope that the government can come up with some provision regarding that. Any more questions? So Hello, sir. Yes, ma'am. Sir, as per NEP policy, as you see के 2020 से लेके till date, NEP is changing their rules and their regulations, especially the credit systems. So it is really getting difficult to understand that every time, every day, as a part of a university, what I think is that every year we need to think about new syllabus, we need to think about new examination schemes, we need to think about new credits to give to the student, and it is getting like a very tedious task for us. Every year, every 6 months, they are renewing their policy. Yes. Too much changes also spoils the quality of work. And if there is no changes, again, it will spoil the quality. I totally agree with you that at least if something is implemented, it should be implemented for 4 to 5 years. Because to get acquainted, we require at least 1 or 2 semesters. And after that, we can put some innovations and we can have a perfection on that particular thing, and then we can move on. So it is a very short period, and because it is a transition phase, ma'am. You're from where? I am from Gujarat, Surat city, Sarvajanik University. Okay. This university, Maharashtra, I would like to highlight in front of you. We had a new university act, then we had new education policy. There are many circulars, GRs coming up of UGC. Even with this center also, it was previously an academic staff college, then it became a human resource development center. Now it is a UGC Malviya Mission Teachers Training Program. So working here for past 12 to 14 years, it get difficult for me to get acquainted with the new guidelines and new policies. So it's really tough thing. Sir, what you suggest, how to cope up with such things? Because we create one policy. Yes, you continue. You continue. Yeah, actually, we are just complete one thing with a one policy. They come with something new. Then how we should cope up with such things? No. You see that this is a transition phase. जब तक के वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसमें अप्स और डाउन्स आने ही वाले. और हम इसे खुशकिस्मत समझे हमारे लिए तकलीफ दे बात है ये कि वो टाइम पर हम हैं और हमसे वो इम्प्लीमेंट होना. ये एक अच्छी चीज भी है, या एक आपको लगता है कि उससे कुछ तकलीफ हो रही है तो वो बुरी चीज भी हो सकती है, लेकिन अब ये हमारे शोल्डर्स पे है इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना. Okay, sir. Thank you so much.
Any more questions? So if there are no questions, we can stop the lecture here. So my special thanks to the director, Professor Atik sir, for calling me. And also my special thanks to all participants, those who have patiently, silently from past 3 hours, continuously listening me, and at last have a good interaction of 15 to 20 minutes. That is the true fruit and benefit of this lecture. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. On behalf of UGC Malviya Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, I here to extend my sincere gratitude to Professor Mohammad Abdul Rafi sir for delivering such a insightful session in this flagship program. Sir, definitely you have shared your valuable insights towards the society, higher education, including skill development and IKS centers. Definitely, sir, there are the many challenging issues in the transit era, but we being a teacher will overcome these issues also. And definitely we will go with the milestone of higher education, and that will be beneficial to our society. So I once again express my heartfelt gratitude and sincere thanks to Professor Rafi sir for being with us, enlighten us, and sparing his valuable time for our center. Thank you so much, sir. And with the kind permission of Professor Rafi sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, Ankit ji. Okay, so participants, tomorrow there will be a no session, and there will be a quiz, MCQ quiz assessment test. Okay, I will put the link in our WhatsApp group as well as in through by email, and that test will be available for 24 hours. Okay, so around 9:30 or 10 a.m. that you will get that link through mail as well as the WhatsApp group, and you have to solve that quiz. Uh, Most important thing is that for earning the certificate of this program, it is mandatory to appear that MCQ test for each and every participant. So it's my humble request that all the participants shall go through that assessment test. Okay. And with this, we will stop here and meet Monday with our regular time, that is 4 p.m. I will share the schedule as well